I have started recording. Uh, Anyone remember what was the last thing we discussed last time? Okay, if you don't remember, I will start by considering fixed point iteration method. Uh, we are in this chapter studying methods of solving a nonlinear equation in the form fx is equal to 0. Uh, and here in this fixed point iteration method, we point out that we can rearrange the equation fx is equal to 0 into the form x is equal to gx, and there can be multiple such arrangements, in which case different forms uh, we can solve fx is equal to by finding an x value that satisfies a form like x is equal to g1x. Such a value which satisfies this equation x is equal to gx will also satisfy the original equation fx is equal to 0. Hence, solving this equation, we get a solution of this equation, which is our this is our original problem. We rearrange this equation into this form and find a value of x that satisfy this equation, which will be a root of this equation. An alternate method that is used to solve an equation of the type x equal to gx for an appropriate root. Uh, this iterative method is known as fixed point iteration method. The method works as follows. This curve is the graph of function y is equal to gx, whereas this straight line is the graph of y is equal to x. And we are trying to search for a point where y is equal to x and y is equal to gx match, which is the point, green point, and we are in search of that green point. We start with some initial approximation. X1, for which the function value is gx1. So a point on the graph is x1 gx1. When we start with the initial value x1, that may not be the x coordinate of this point, which is the intersection of y is equal to x and y is equal to gx that is required. So what we do, we assign gx1 the value x2, and according to x2, calculate g again. It is like we have traveled from this point onto the line y is equal to x, assuming gx to be lying on this, which is not true. The actual point of the graph is this x2 gx. Then we assign the value of gx2 to x3 and assume that gx2 is a point on the line y is equal to x, which is not true. It is this point. Actual point of the graph is somewhere here, x3 gx3, and in this way we see that uh,
Starting with x1, we get gx1. We assign gx1 to x2. We get this point and calculate gx2. Then gx2 is assigned x3, and we get this point of the graph. And every time the point of the graph of G is coming closer and closer to the point of the graph y is equal to x, where the two graphs intersect each other. Uh, this point where y is equal to x and y is equal to gx have a common point is known as a fixed point, and a general notation is p is equal to gp. Now, considering fx equal to 0, our method, as I indicated, is to rearrange this into x is equal to ga. Finding a root of fx is equal to 0 is equal to finding the point where the graphs of y is equal to x and y is equal to gx intersect. If the graph of any function given by y is equal to gx intersects the graph of the straight line y is equal to x at some point x is equal to p, then the point p gp, where gp is same as p, is called a fixed point of the function g. Thereby, x is equal to gx is a rearrangement of fx equal to 0, finding a fixed point of g in uh, is same as finding a root of the original equation. If we assume that x is equal to x1 is an approximate fixed point, then the point x1 gx1 is not along the straight line y is equal to x as shown in the figure above. But if we assume gx1 approximately a fixed point of p, say we is assigned gx1 is equal to x2, x2 should be a better approximation to the required fixed point. Then the point x2 gx1 is on the straight line y is equal to x. However, the point x2 gx2 is on the graph of t and not on the straight line y is equal to x. Now we assume that gx2 is approximately a fixed point p, and then we assign gx2 to be some number x3, which we assume to be a better approximation to the required fixed point. And x3 gx2 is on the straight line y is equal to x. However, the point x3 gx3 is on the graph of g and not on the straight line y is equal to x. Proceeding in the same way, if gx3 is assumed to be a fixed point, say we assume gx3 is equal to 4, is a better approximation to the required fixed point, then point x4 gx3 is on the straight line. However, x4 gx4 is on the graph of g and not on the straight line. Note that the points that we are finding on the graph, x1 gx1, the first point, x2 gx2, the second point, x3 gx3, next and next and next are along uh, the line, uh, are not along the line y is equal to x, and all are coming closer and closer to the fixed point, uh, which is PGP, shown as the blue point, that is intersection of the graph y is equal to x and y is equal to g. Now, you go through this write-up and you understand the logic of this algorithm, which is a very simple algorithm to find the fixed point of any function g. So x1 से start करके gx1 को x2 कह दिया, then gx2 को x3 कह दिया, gx3 को x4 कह दिया, so on and so forth. nth approximation पर function value g निकाली और उसको xn plus 1 कह दिया और इस सिलसिला जारी रहा. कब तक जारी रहा? Of course, when the last x value and the new x value difference is very small, less than tolerance, and then you stop that. So the algorithm is very simple. Here we uh, describe the algorithm. Uh,
We are given some nonlinear equation fx is equal to 0 that has a root near some x naught. And then next step is consider rearrangement of the equation in the form x is equal to gx. Set up two special numbers, tolerance, which is required to stop the process when convergence is obtained, and this is tol will be a small number, and div is a large number, and that is used in case the process diverge. Uh, we'll see that not all rearrangements of fx is equal to 0 into x is equal to gx, not all of them will be converging. Some, rather most of them diverge, only some of them converge. तो हमें इस एल्गोरिथम में टॉलरेंस इस्तेमाल करनी है to stop the process when the required accuracy is approached, and we have to use a large number to indicate that the difference between the last value and the new value is are too far away, and we have to exit or stop the process with a message that process is diverging. Uh, Gx not calculated is named first x1. If neither tolerance nor divergence is there, we relabel uh, x1 as x naught and go to step 4 and calculate new x1. Check the tolerance. If it is achieved, terminate with the message that x1 is an approximate root. If tolerance is not achieved, look for the divergence. If the last x and the new x are too far away, more than the large number that you have selected, then you have to exit with the message that the process is diverging. If neither tolerance nor divergence is achieved, then relabel the new calculated x1 value as the old value and go to step 4 again. So this is perhaps simplest of the algorithm that we have considered up to now. And now let us consider an example. Uh, a quadratic equation x square minus 2x minus 3 is equal to 0, where x is equal to 1 is a known root, x is equal to minus 1, minus 2, I don't know, x is equal to 1, minus 1. Okay, you can factorize and see what are the roots. 3 and minus 1 are the roots of this equation. And we consider its rearrangements in this form. Take this x common, बल्कि नहीं, x square on one side, 2x plus 3 on the other side, and take the square root. एक rearrangement हो गई. Then take x common, take 3 to the other side, x common लोगे तो x minus 2, 3 upon x minus 2, and x square minus 3 on one side and minus 2x on the other side, plus 2x हो गया, 2 से divide कर दे, ये third rearrangement आ गया. Now using this rearrangement where g is the function under the root 2x plus 3, we start our calculation at x is equal to 1.5, for which this function will give you this function for x is equal to 1.5 is this, and this is considered as a new x value for which the function is calculated again, that gives us this value. This is considered the new value of input. So every g value that we consider for any x value becomes the next x value. And in this process, we note that
This rearrangement is converging to 3, which is a root. Similarly, this converges to -1, which is also root, but the next diverges and it does not give me any root. Note that the arrangement G1 converges to 3, G2 converges to -1, which are the roots of the quadratic equation. So far, so good, but G3 is diverging very rapidly. Thus, the fixed point of G1 and G2 are the roots of the original equation, but the fixed point of G3 could not be obtained, and this rearrangement, yeah, that is the third one, fails to lead to a root of the original equation. This did not happen because we are dealing with a quadratic equation. हमारे पास कोई और इक्वेशन हो किसी और नेचर की उसमें भी हमारे पास किसी रीअरेंजमेंट कन्वर्जेंस आएगी किसी में नहीं आएगी. The matter is more serious. Not every rearrangement, as I said, converges. So let us see this example, which is a cubic equation. And remember that cubic equation will have at least one real root. Any third degree equation has 3 roots, but तीनों रियल हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं. एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर हो सकता है. And we go to solve this equation using fixed point iteration method, for which we require some rearrangements. तो उसकी एक rearrangement x is equal to 2 plus 1 upon x square है. How it is, you can check algebraically that how x cube minus 2x square minus 1 is equal to 0 is changed to x is equal to 2 plus 1 upon x square. Simply divide throughout by x square and you will get this arrangement. How this arrangement is obtained? You take x square common और उसके बाद 1 को दूसरी तरफ ले गए, x square कॉमन लिया तो x minus 2 बचा, उसको नीचे ले आए और x square है तो उसको स्क्वायर रूट कर दिया. Of course, there will be a positive square root and a negative square root. I have considered only positive square root. The third rearrangement is made from what? Take only x common from these two. What is left is x square minus 2x, and this rearrangement is obtained. Now, in this case, the first rearrangement is neatly converging to a root. इस x को इस g में रखा, g की वैल्यू आई 2.16, which is our new approximation, जिसको फिर इसमें रखा, हमारे पास आई 2.214335, ये हमारी नई अप्रोक्सीमेशन है, इसको x समझ लिया, फिर इसमें रखा, and so on. So this converges neatly. Whereas the second rearrangement, if we start with 2.1 or any other number greater than 2, because less than 2 will make it complex. मगर 2.1 से ही कैलकुलेशन जो हमने की तो g की वैल्यू 3 से ज़्यादा आई, उसको मैं नया x कंसीडर करूँगा तो 3.16 minus 2 and that will give you 0.92. अब 0.92 को अगर मैं x लेता हूँ तो ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लिहाजा ये रीअरेंजमेंट मेरे किसी काम की नहीं है. Because I am looking for real roots only, this method is only for to find out a real fixed points, not the imaginary one. The third one, and in the third one we see that what was the third one? This one, 1 upon x square minus 2x. इसमें 2.5 से शुरू किया, g की वैल्यू 0.8 आई, ये नई अप्रोक्सीमेशन ली, g की वैल्यू -1 आई, ये नई अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फिर g कैलकुलेट किया 0.3 को x लिया, नई वैल्यू -1.88, and then we keep on doing that and we'll keep on getting alternating numbers, and we see that one number is going close to 0, the other number is becoming large negative number. So this is a diverging process. So
we say that G3, this third rearrangement is also not giving us any result. So only first rearrangement shows convergence, and a root is obtained correct to 7 decimal places. The second crashes down because the number becomes negative under the root. The third diverges with fluctuations. So these are two examples that demonstrate the use of fixed point iteration method, especially if you are working with calculators, and if you are working with the Excel sheet, uh, the process becomes very fast. Let me show you an Excel sheet. If there is one available. Uh, I hope you can see this Excel sheet. No, this is not the one. Okay, at the end, I will consider development of an Excel sheet. I go back to the problem of finding the root of some given positive number. Square root, cube root, third root, seventh root, 70th root, or whatever, of a positive number greater than 1. So for this, at the end of Newton's method, we have developed this formula for obtaining qth root of the positive integer n. And we see that this is exactly like xn plus 1 is equal to gxn. That means fixed point iteration method. So uh, this fixed point iteration method technically was uh, introduced at the end of the study of Newton's method, uh, while considering the problem of finding out root. How this formula was developed, you can refer to the file that I have shared with you for Newton's method. And here we don't need a rearrangement, rather just uh, this right side function in which we have to find seventh root of 15. So n is equal to 15 and q is equal to 7. तो इस फॉर्मूले में कैपिटल N की जगह 15 और small q की जगह 7. So this becomes the function gx. And starting with 1.1, we get the root correct to 6 decimal places after say 8 iterations. If I start with 1.5, I get it more quickly because 1.5 is closer to 1.472357, which is the seventh root of 15. 1.1 was too far away. But whenever you solve such a problem where you have to find seventh root or 10th root of some positive integer, any positive integer, take a square root or cube root or nth root, you will always get a number greater than 1. That is why we start the procedure with number greater than 1. Note that the two tables of results are not using different arrangement because इस प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर फार्मूला डेवलप कर लिया गया था और अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट सिर्फ उसी सूरत में होगा जब हमारे पास जनरल प्रॉब्लम होगी एफ एक्स इज इक्वल टू 0. So that finishes fixed point iteration method discussion. What are the important things? Important thing is the understanding of this process.
how we are moving along the graph of G so that the point every time we get is coming closer and closer to the line y is equal to x. The procedure requires to start with an initial approximation and calculate value of the function g that is considered the new approximation. Uh, After understanding of this, you need to consider the fact that any given nonlinear equation fx equal to gx, fx is equal to 0 can be converted into different forms of x is equal to gx type. And this is the major formula for the fixed point iteration method. And the next important thing is the logical steps. These logical steps will be useful for making a program. And I will suggest that you make a program, you will have to consider the function hard-coded, defined in your program. GX rearrangement made manually and put into the program as a defined function, and then you can calculate this thing by calling that function every time you have some initial value x naught. Initial value x naught in a program you can arbitrarily choose because it is taking care of the program or the algorithm is taking care of convergence as well as divergence. तो कोई भी इनपुट तुम लोगे तो तुम्हें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मिल जाएगी. इसमें एक स्टेप ऐड कर सकते हो यहाँ पे कि डिस्प्ले x naught gx naught, because while you making program you are not seeing numbers, तो वो खुद तुम्हें डिस्प्ले करवाने पड़ेंगे. And at the end, this whole thing, the process of implementing the algorithm manually using calculator, using Excel sheet, whatever. I think I had discussed this last time, and this is now revised. And let me move forward. Uh, the next thing is a Mueller's method. Mueller's method is not a linear interpolation method. That means close to a root, we don't consider tangent line or secant line, or we don't consider a function to be behaving a straight line very close to a root. Rather, we assume that the function is behaving as a parabola close to a root. This figure, I have shared the book, and the figure is taken from the book. Here I just describe the process that develops the algorithm for Mueller's method to find a root of any nonlinear equation with the second degree approximation. That means we are considering the function to be behaving as a parabola. This is the graph of the function. And this in close to a root, it is more like a parabola. So that is why we consider this. Whether you know the graph of the function, you can apply this algorithm to practical life importance क्या है. When I'm talking about mathematics and mathematical procedures, in general, I don't bother about practical importance. Yet, the question is raised. So I should give an answer. देखो, मैं एक फिजिसिस्ट हूँ, या एक इंजीनियर हूँ, या एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ,
I'm studying some real life problem, and that real life problem, when converted into a mathematical model, and that is what happens uh, for researchers working in most of the areas of application, real world life application of mathematics. जब आप किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, वट एवर यू डू विद वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, आप एक मैथमेटिकल मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं. If the model, like economy of United States, तो एक साहब को नोबेल प्राइज मिला था इस चीज़ पर कि उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया था इकोनॉमी ऑफ मैथमेटिक्स यूएसए का, जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बेस करता था. इट वाज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और उसके सॉल्यूशन से वो इकोनॉमी पैरामीटर्स को किस तरह से डिस्क्राइब कर किया उन्होंने, उस पर उनको नोबेल प्राइज मिला. तो जब भी कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है कन्वर्ट की जाती है इनटू मैथमेटिकल मॉडल, आइदर यू गेट a system of linear equation or a system of non-linear equation. Now, before you become able to solve a system of non-linear equation, uh, you should first learn how to solve a single linear equation in one unknown. Practical problems involve multiple equation and multiple of unknowns. And solving such equation, for example, मैं ऑर्बिट ऑफ प्लूटो को स्टडी करना चाहता हूँ. Now, Pluto is moving under the effect of gravity of Sun and all other planets, and there are minute effects, gravitational effects of other objects that are there in the universe, in the solar system. हर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, and it can become a collection of say hundreds or thousands of differential equations to be solved. तो प्लूटो का ऑर्बिट जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, इन द सेंस कि 200 साल पहले ये कहाँ था और 4 साल बाद कहाँ होगा, मुझे ये थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, विच इज नॉट पॉसिबल एनालिटिकली. देयर आर सेमी एनालिटिकल मेथड्स, बट मोस्टली न्यूमेरिकल मेथड्स आर यूज्ड. तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो बड़ा एडवांस्ड फॉर्म है इस कोर्स का. अभी तो हम एलिमेंट्री फॉर्म्स कर रहे हैं जहां हम सिंपल नॉन लीनियर इक्वेशन एक अननोन की सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. So if you are worried about whether whatever you are studying is related to your practical life or not, it is not the time to bother. You are learning alphabets. I hope you are familiar with the term alphabet from your theory of computer science. और योर अर्ली लाइफ, जब तुमने उर्दू या इंग्लिश सीखनी शुरू की थी, पहले तुम अल्फ़ाबेट सीखते थे, उसके बाद छोटे छोटे 3-4 वर्ड्स के लेटर्स के अल्फाज सीखते थे, और फिर जुमले बनाना सीखते थे. तो अभी हम न्यूमेरिकल मेथड्स की एबीसी कर रहे हैं. वर्ड्स और जुमले बनाना जो है वो जब आएगा तो तुम्हें लग पता जाएगा, मज़ा भी आएगा. बट बिलीव मी, whatever I'm discussing is definitely useful in practical life. अब तुमने वो टाइम जो मैंने लगाना था इस एल्गोरिथम की डेवलपमेंट के लिए, वो तो इस ऐसे सवाल पे गुजार दिया जिस पर मैं बिल्कुल शुरू में बात कर चुका था इन माय फर्स्ट लेक्चर इंट्रोड्यूसिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस. अब जिस किसी ने भी ये सवाल किया था, Irtizar Rizvi and Abdur Rafi said, good question. तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस जो है उसको दोबारा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए. मैं वहाँ ये सब कुछ बता चुका हूँ कि ये सब एक एक चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है. Now I know that
अभी जो मैंने 5 मिनट डिस्कशन की है सिर्फ 18 लोगों ने सुनी है. The rest of the 72, 73 will be seeing it in the video that I'll share. Thank you. Thank you. Your satisfaction is more important for me than anything else. लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है. इफ़ यू डेवलप इतनी अंडरस्टैंडिंग जितनी कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन हुई है अभी, तो दैट विल बी बेटर. Now in this method, we start the procedure with again locating a root. If the interval x2 x1 contains a root, note that हमने उल्टा कर दिया है. हम x1 x2 को के तौर पे लिखा करते थे इंटरवल को, अब मैंने x2 x1 लिखा है. So left hand point is x2 and the right hand point is x1. And then we consider a parabola P defined as AB square plus BB plus C, where A, B, C are constants to be determined. And what is V? V is a new variable. That means we'll transform our variable x to V by using this transformation, x minus x naught. Now, what is x naught? This x naught is supposed to be the point where the parabola intersects the y-axis. Now, dotted line parabola is intersecting y-axis here. So, इसका जो x है वो x naught कहलाया, और new variable v जो हम introduce कर रहे हैं वो x minus x naught है. Then we define the distance of x naught from x1 and x2. x1 right पे है तो h1 is x1 minus x naught, so that h1 is positive. x2 left पे है, so x naught minus x2, so that h2 is also positive. So that we have, for x is equal to x naught, v will become 0. So the parabolic equation that we are, this is a second degree polynomial, P2 means second degree polynomial. इसमें v की वैल्यू 0 रखेंगे, ये 0, so it comes out to be c. Now x is equal to x naught अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में रखें, fx is equal to 0 है, तो fx naught will be called f naught, the value of the function at x naught. और इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x naught जो भी है, that we will be calling fx naught, and according to parabolic equation this value is c, because at x is equal to x naught, v is equal to 0. Putting v is equal to 0 in this equation, we get c. So putting x is equal to x naught here or v is equal to 0 is equivalent. So एक फंक्शन fx में भी x naught रखेंगे तो इस वैल्यू fc कहलाएगी, जो कि f naught कहलाएगी, जो कि c के बराबर होगी. So out of the three unknowns a, b, c that we want to find out the parabolic equation, we get the value of c as the function value at x naught, and x naught is the point where the graph of the function crosses the x-axis. इसी तरह अगर इसमें x is equal to x1 रखें, v will be x1 minus x naught, which is h1. तो इस पैराबोलिक इक्वेशन में v की जगह h1 रखा तो ये सब आया, और x is equal to x1 फंक्शन में रखा तो ये आया. Sorry, my connection was dropped and it is connected again. I was telling you that x is equal to x1 रखें तो v की वैल्यू h1 हो जाएगी. पैराबोलिक इक्वेशन में रखेंगे, so we will get fx1. fx naught जो है वो c है, तो यहाँ पे हम c रख सकते हैं.
इसी इन्हीं इक्वेशन में x की जगह x2 रखेंगे तो v की वैल्यू x2 माइनस एक्स नॉट यानी माइनस h2 आ जाएगी, जिसकी वजह से पैराबोला के इक्वेशन में माइनस h2 रखा, fx2 के बराबर होगा ये। तो ये जो दो इक्वेशन है इसमें एफ नॉट इज इक्वल टू सी रख दें तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ जाती है। Now these two equations involve two unknowns as far as finding out the equation of parabola that is required to approximate the function close to the root. Now a and b has power 1, बाकी सब constants है इस equation में, so this is a system of linear equations in two unknowns and can be simultaneously solved. इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने स्टडी इस्तेमाल की है, दोनों इक्वेशंस को, पहली को यानी सेकंड इक्वेशन को h2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन को h1 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। तो ऐड करने के बाद जो कुछ बचा उसके साथ मैंने जो अलजेब्रिक गेम खेला है उस पर ज़रा गौर फरमा लीजिएगा। यहाँ से h1 कॉमन लिया है तो इसकी क्या शक्ल बन गई, और h1 कॉमन लेने के बाद हमारे पास रेशियोज हैं h2 अपॉन h1, h2 अपॉन h1, h2 अपॉन h1 थ्रू आउट द इक्वेशन। तो h2 अपॉन h1 को एक नया नाम दे दिया गैमा, जस्ट टू राइट डाउन इक्वेशन मोर इन अ मोर सिंपल फॉर्म। सो ये इक्वेशन आ गई जिसमें हमारे अननोन में से सिर्फ ए है, बाकी सारे नोन कॉन्स्टेंट्स हैं, एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, f gamma, gamma is h2 upon h1, h2 is x naught minus x2, h1 is x1 minus x naught। तो इस इक्वेशन में a के अलावा बाकी सब कांस्टेंट नोन है, तो a की वैल्यू निकल आई। अगर सेकंड इक्वेशन रीअरेंज करें तो वो इस फॉर्म में आ सकती है। व्हाट सेकंड इक्वेशन? दिस सेकंड इक्वेशन। इसको रीअरेंज करें तो वो इस फॉर्म में आ जाती है। दिस फॉर्म b is equal to this involves every known thing, f naught, f1, h1, h1, a, या all this। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a की वैल्यू ये आई और b की वैल्यू ये आई। So that now we look for parabola point that crosses x-axis, and there the y value should be 0. That is p2, the value of the polynomial, second degree polynomial should be 0. इसका मतलब है अब मुझे ये quadratic equation solve करनी है। Let me give you the reference that we were trying to fit a parabola to this situation, and this parabola, wherever it intersects the x-axis, will have a 0 value. Y value will be 0 there. So इस equation में ये y value है, इसको 0 रख के हमने equation लिखी और कहा कि ये quadratic equation है, और quadratic equation का solution तुम लोगों को मालूम है, और v को हमने नया वेरिएबल लिया था x माइनस एक्स नॉट के तौर पे। तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब x नॉट जो है हमारी one of the initial three values, x2 on the left, x naught in the middle, x1 on the right. X naught was the coordinate of x where function f crosses y-axis. Sorry, parabola crosses y-axis. So if it is an approximation, the new approximation is this small x. But to play with this form of the quadratic formula expression is not a numerically very nice thing. So इसके साथ हम थोड़ा सा जगलरी करते हैं कि जो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास जो हासिल होता है वो ये हासिल होता है। Now, why this was not very useful? मुझे x और x माइनस एक्स नॉट का डिफरेंस चाहिए। I want to make this difference least possible.
लीस्ट पॉसिबल के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर के साथ में खेलूं और डिनोमिनेटर को लार्जेस्ट पॉसिबल बनाऊं सो दैट द ओवरऑल नंबर बिकम्स स्मॉलर. That is why this expression was not very useful. To make the numerator here very small is not simple, but to make the denominator here very large or larger in some sense is much easier. कैसे? ये बीच में साइन है प्लस माइनस. अगर बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके एक बड़ा नंबर बन जाएगा. अगर बी का की वैल्यू जो हमने निकाली है वो नेगेटिव है, तो इन प्लस माइनस में माइनस ले लो, तो माइनस बी और माइनस ऑफ दिस will be a large number in its absolute value, so that denominator becomes as large as possible, so that the difference between x and x naught will be smaller and smaller. So that is why that expression is converted into this, and that gives me a tool with the help of which I can keep x closer and closer to x naught, so that x and x naught differ by a small number. And then we arrange Mueller's methods steps that I had described last time. It is uh, something which is much longer computationally, or the algorithm is more complex in the language of computer science, as well as for a common mathematics student. अब तक जितने algorithm थे वो निस्बतन इसके से बहुत simple थे. So we start with selecting a problem fx is equal to 0 and locate the root, and if it is lying between two numbers, left side का number उसको x2 कह दिया, right side के number को x1 कह दिया. यहाँ पे tolerance हम ftol कह रहे हैं. ये हम function पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि currently हम जिस x पे पहुंच गए हैं उस x पर function की value क्या है. अगर function की value very small है, इसका मतलब है function graph is very close to x-axis. Let x naught be some number such that x naught, x2 less than x naught less than x1. Compute fx naught, call it f naught, fx1, fx2, h1, h2, gamma. C की value को f naught, we have seen that C की value f naught P. Then calculate value of f with all values that we have available. Then the calculate value of b with all values that we have available along with a, that is just calculated. And if b is positive, set x is equal to x naught upon positive b, positive square root. If b is negative, set x is equal to x naught minus 2c divided by b खुद negative है, अंदर इसके negative sign है, so minus square root. So x has to be calculated either this, using this expression, or using this expression, depending on if b is positive ये expression इस्तेमाल करें, if b is negative ये expression इस्तेमाल करें. Now if b is 0, इनमें से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है. In either form, when b is equal to 0, 4ac may be negative. But if 4ac is positive, the method crashes down. Because अगर 4ac पॉजिटिव आया और b 0 है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जिससे प्रोसेस क्रैश कर जाएगा. If the process does not crashes down even with b is equal to 0, or if b was not 0, पॉजिटिव केस में नया x यूं कैलकुलेट किया, नेगेटिव केस में नया x यूं कैलकुलेट किया, b 0 के केस में भी हम इनमें से नोट करते हैं कि the value will be 2c upon
under the root negative 4ac, which works only when 4ac is negative. अच्छा जी, नया x जो आ गया, अगर वो x नॉट के राइट पे है तो नई रीअरेंजमेंट क्या होनी चाहिए? x को x2 ले लो, and x1 remains on the right, and these are new x values. X is less than x0, यानी x लेफ्ट पर है, तो फिर x2 को छोड़ दो, x2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, then rearrange x2 x is equal to x1 x0 as x2 x0 x1. इस लाइन का पर्पस ये है कि जो भी नई x वैल्यू आ रही है इस फॉर्मूले से, अगर वो x नॉट के राइट पे है तो x नॉट अपनी जगह रहेगा, x इज इक्वल टू x1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, और अगर x लेफ्ट पर है तो x1 की जगह x आ जाएगा. स्टिल हमारी अरेंजमेंट वैसी की वैसी रहेगी, x2 लेस देन x0 लेस देन x1 इस केस में भी और इस केस में भी. Now these x2 x0 x1 or these x2 x0 x1 are not the original but the adjusted. इन तीन में से एक नंबर x1 है, या तो लेफ्ट वाला है या राइट वाला है. Then we check for the tolerance. फंक्शन वैल्यू टॉलरेंस से कम हो गई है तो रिटर्न एज द अप्रॉक्सीमेट रूट. एल्स अगर टॉलरेंस अचीव नहीं हुई है, go to step 3 and with new x0 x1 x2 repeat the whole set of calculations. Now we have to solve this equation using Mueller's method. Locating the root process पहले हमने किया और देखा कि 0 और 1 के दरमियान एक रूट है, 1 और 2 के दरमियान एक रूट है. So which root we are going to find out? जीरो और 1 के दरमियान एक रूट था. 0 लेफ्ट पे है तो x2, 1 राइट पे है तो 1, और x0 को हमने मिड पॉइंट ले लिया, सम पॉइंट इन बिटवीन. fx0 की वैल्यू कैलकुलेट की, fx1 की वैल्यू कैलकुलेट की, fx2 की वैल्यू कैलकुलेट की, h1 की वैल्यू कैलकुलेट की, h2 की h1 is x1 minus x0, x1 minus x0, half I. h2 is x0 minus x2, ये भी हाफ I. गैमा जिसको मैंने यहाँ g लिख दिया है वो रेशियो है h2 अपॉन h1, तो 1 आ गया. उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूले हैं a और b के, उनसे हमने a की वैल्यू कैलकुलेट की, b की वैल्यू कैलकुलेट की, c की वैल्यू fx0 है वो एज इट इज कॉपी की, and then the value of x is calculated as per the strategy described in the algorithm. Now we got the function value at new x value as this function value, which is small. Now you see that x is to the left of x0, तो x0 की जगह नया x आ गया, मिडिल पॉइंट 0.5 रहा, x2 अपनी जगह रहा. So new x0 x1 x2 are so chosen from 4 values 1 2 और 3. ये 4 जो x वैल्यूज हैं इनमें से 3 x वैल्यूज हमने चूज करनी है. ऐसी के इन 4 में से जो लेफ्ट मोस्ट है दैट विल बी x0, जो राइट मोस्ट है, सॉरी लेफ्ट मोस्ट है वो 0, जो राइट मोस्ट है वो 0.5, और नई x वैल्यू जो है वो बीच में. And then fx0 fx1 fx2 h1 h2 gamma, a and b and c, and new x, and the function value is this. Another iteration adjusting new x values x0 x1 x2, all the values calculated,
and the function value is of the order of 10 to the power minus 7, that is very small. थर्ड आइट्रेशन पे हमें अच्छा रिजल्ट मिल चुका है, और फोर्थ आइट्रेशन में 10 to the power minus 9, which is a very good result. Since it is a quadratic approximation, a second degree approximation, all the previous one were first degree approximation. This converges more rapidly. In only 3 iterations, this quadratic process of Mueller's method gives accuracy of 6 decimal places. So that completes a description of Mueller's method, and the most complex process that we have studied up to now. Let me move on. I have discussed fixed point iteration method. I have discussed Mueller's method. Let me briefly discuss Horner's method. I hope some of you remember synthetic division. Now, what's the significance of synthetic division? Let me zoom out this a bit. I have an equation x cubed plus x square minus 3x minus 3 is equal to 0. Now, जिस मेथड को मैं हॉनर्स मेथड कहता हूँ, किताब में इसको मेथड फॉर पोलिनोमियल्स के नाम से हेडिंग दी गई है. इस मेथड में हम सिर्फ पोलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं. एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट पोलिनोमियल इक्वेशन में जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट से खेलते हैं. एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का 1, एक्स का -3 और कांस्टेंट -3. अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि x is equal to 2 is an initial approximation of the root, तो इसका मतलब है x minus 2 से अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो थर्ड डिग्री के बजाय सेकंड डिग्री रह जाएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा. तो डिवाइड करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल कर रहे हैं. स्टार्टिंग विद कोएफिशिएंट्स 1 1 -3 -3. x -2 से डिवाइड करने का मतलब है मैं अपने प्रोसेस में 2 को इस्तेमाल करूंगा. सिंथेटिक डिवीजन क्या करती है, पहला कोएफिशिएंट एज इट इज उतार लेती है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज प्लेस्ड हियर. ये दोनों नंबर ऐड किए जाते हैं, रिजल्ट इज 3. 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज प्लेस्ड हियर. ये दोनों नंबर ऐड किए जाते हैं, रिजल्ट इज 3. 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज प्लेस्ड हियर, और इन दोनों का सम 3. ये जो रिमाइंडर आता है, देखें अगर x इक्वल टू 2 रूट होता तो रिमाइंडर 0 होता. आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. लेकिन अगर 0 नहीं आया तो हम इसको रिमाइंडर कहते हैं. मजे की बात यह है कि अगर x इक्वल टू 2 मैं इस पोलिनोमियल में रखूं तो जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी. दैट मीन्स द रिमाइंडर इज द वैल्यू, फंक्शन वैल्यू. अच्छा जी, अब इस रिमाइंडर को तो छोड़ दीजिए. इस इक्वेशन, इस पोलिनोमियल जो कि थर्ड डिग्री है, उसको x -2 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक आएगा उसके कोएफिशिएंट 1 3 3 होंगे. इसका तजर्बा तुम बॉक्स डिवीजन करके कर सकते हो कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा. सो यू विल गेट दैट. एंड अब 133 को, जो कि सेकंड डिग्री पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेटिव है, फिर x -2 से डिवाइड करें, यानी 2 को रूट समझ के. तो सिंथेटिक डिवीजन का एक और स्टेप यहाँ आ रहा है, यानी डबल सिंथेटिक डिवीजन हो रही है. 1 written as it is, 2 into 1 is placed here. These two numbers added becomes 5. 5 multiplied by 2 is 10. These two numbers added becomes 13. अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर दूं
और x वैल्यू 2 उसका रूट होता तो ये रिमाइंडर 0 आता, लेकिन इस रिड्यूस पोलिनोमियल इक्वेशन का रूट नहीं है x वैल्यू 2, तो ये आया रिमाइंडर 13। मजे की बात ये है कि इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस पोलिनोमियल, उस डेरिवेटिव में x वैल्यू 2 रखो तो वो भी 13 आएगा। इसका मतलब है कि सेकंड रिमाइंडर गिव्स मी द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट 2। This is a method in which we calculate function value as the first remainder of synthetic division and derivative value as the second remainder of the synthetic division. So we get function value at 2, we get derivative value at 2. उसके बाद न्यूटन मेथड का एक स्टेप लगाएंगे, x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ प्राइम एक्स। So we get 2 minus 3 upon 13. ये इतना गैप क्यों हुआ? अच्छा, पिक्चर की वजह से। So 2 minus 3 upon 13 comes out to be this। और वो पिछला प्रोसेस पूरा जो है सिंथेटिक डिवीजन का, जो हमने x इक्वल टू 2 के लिए किया था, वो x इक्वल टू न्यू x जो वैल्यू आई है उसके लिए करेंगे। So the new remainder function value is this, second remainder derivative value is this. So the new x is obtained as previous x minus function value at previous x divided by derivative value at previous x, and we get the new value of. Similarly, the next value is obtained, and we see that we already have got the 3 decimal place accuracy. This is the way we find the root of a polynomial equation using the double synthetic division and one step of Newton's method. Double step of synthetic division जिनमें पहला remainder function value, दूसरा remainder derivative value, and then a step of Newton's method. New value obtained. For new value, another double synthetic division. First remainder is function value, second remainder is derivative value, and another step of Newton's method. This way, this method is a combination of polynomial division, polynomial synthetic division, double synthetic division to obtain function and derivative values, one step of Newton's method, then double synthetic division, and so on and so forth. The book explained an algorithm to be used to convert this whole thing into a program. I leave this as an optional, and consider this example, which is a 4-degree equation. मैंने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की और मुझे पता चला कि ग्राफ जो है ये -3 के लेफ्ट से गुजर रहा है x एक्सिस से, और -2 के राइट से गुजर रहा है। तो -2 के करीब इसका एक रूट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करूं। लेट मी सी दैट आई कैन शेयर विद यू दिस एक्सेल शीट। वेयर इज दैट एक्सेल शीट? Here is the Excel sheet. Okay. ये मैंने फंक्शन वैल्यूज निकाल के ये ग्राफ प्लॉट किया था, डेरिवेटिव वैल्यू निकाल के भी कुछ चेक कर लिया था, और ये मैंने सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल की है। ये मेरी इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट 1 3 -2 15। देखना यहाँ पे x की वैल्यू मिसिंग है, सो x की टर्म का कोफिशिएंट जो है वो 0 है। इसका मतलब कोफिशिएंट लिस्ट मेरी होगी 1 3 -2 0 15। तो 1 3 -2 0 15। मैंने चूंकि ग्राफ से देख रहा हूँ कि -2 के करीब है एक रूट, तो मैंने सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस शुरू किया -2 से। 1 as it is, 1 into -2, sum of this is 1, 1 into -2 is -2, इन दोनों का सम -4, -4 into -2 8, 8 plus 0 is 8, 8 into -2 is equal to -16, and the sum of these two is -1. So the function value is -1. उसके बाद मैंने 1 1 -4 8,
ये कुछ गड़बड़ हो गई। वन वन फोर वन वन -4 8 और -2 से सेकंड सेंचुरी डिवीजन कर रहा हूँ। हाँ, ये गड़बड़ यहाँ से शुरू हो रही है। 1 इंटू -2 इज -2, इन दोनों का सम आया -1, -1 इंटू -2 इज +2, +2 और -4 का सम आया -2, -2 इंटू -2 4, 8 and 4 12, and second remainder is 12. So the derivative value is 12. Function value is -1, derivative value is 12. So x minus fx divided by f prime x is -2, gives me this number. And this number is my new number that I will use to consider the next steps of synthetic division. So this sheet is an application of the method that we have just described. I'll share this sheet with you on the resources so that you can study this yourself. You can make this sheet yourself. This is just a demonstration. Okay. So after Horner's method or a method for polynomial, I've discussed the Miller's method today. I've discussed fixed point iteration method today. And I had already considered QD algorithm. So in next 10 minutes, I will revise QD algorithm and then I'll give you an assignment for this part of the course uh, where you see that we are focusing more on polynomial equation now. General equations जो हैं उनके लिए the most popular method is Newton's method, and those who are more mathematically smart, they go for Mueller's method. There is another method, Bjornström method, that I am not considering this time. Rather, QD algorithm. Unfortunately, this QD algorithm is not discussed in the book. ये एक पुराने एडिशन में हुआ करता था. मेरे पास है वो पुराना एडिशन, तो उसके जो पेजेस हैं जिसमें QD algorithm डिस्कस हुआ है, वो भी मैं आपसे पिक लेके उसकी PDF बना के शेयर कर दूंगा. This QD algorithm is a special algorithm for polynomial equation. Generally, polynomial equation is written in this form कि जितने पावर की टर्म है x की यानी अननोन की, कोफिशिएंट का नाम भी उसी के हिसाब से होता है. xn का कोफिशिएंट an, xn x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2, x का कोफिशिएंट a1, x पावर 0 का कोफिशिएंट a0. लेकिन हम QD algorithm में स्कीम को उल्टा कर देते हैं. लार्जेस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट a0, next a1, next a2, and coefficient naming is reversed. So we have got this equation to work with, and what we do, we actually make an effort to obtain all possible roots at the same time. Remember, a fourth degree polynomial equation will have 4 roots. Possibilities, सारे के सारे रूट अलग अलग हों, रियल हों, सारे के सारे रियल हों लेकिन रिपीटेड हों, दो दो करके हों, एक और 3 रिपीटेड हों, या चारों के चारों रिपीटेड हों. मोर पॉसिबिलिटीज, 2 रियल हों और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर हो. मोर पॉसिबिलिटीज, 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर हो. In any case, a 4th degree polynomial will have 4 roots. Any degree polynomial will have n roots. Algorithm starts with the setup of a table of this kind.
where we have column heads that we call E0, E1, E2, En. And between every two values of, or every two columns of E, there is a column of Q that we call Q0, Q1, Q2 up to Qn minus 1. Once we understand the structure of the headings and the columns, we develop the first row of Q values. So in the columns of Q, the first place is taken by ratio of the coefficients A1 and A0 multiplied by minus 1, whereas every other Q value is assigned 0. Once in all columns of Q, first element is written in this form, we go to write down first element in the columns of E below the values written in the columns of Q, so that we can see separately कि ये row Q की है और ये row E की है. Now in the row of E, पहला और आखिरी एलिमेंट 0 होगा. इसका मतलब है E0 कॉलम कंप्लीटली हर वैल्यू 0 आएगी, En कॉलम कंप्लीटली हर वैल्यू 0 आएगी. What happens in between? E1, E2, E3 ये कैसे निकलेंगे? E1 पहला जो है that will be A2 upon A1, E2 पहला जो है A3 upon A2, A4 upon A3 and so on and so forth. Last E value before the 0 value in the last column of E, An upon An minus 1. So the part of algorithm for development of the first row of Q and the first row of E is different. Selective, a fixed procedure, and then a repetitive procedure. The repetitive procedure is that I will calculate a new Q value using what? यहाँ पे मुझे Q value calculate करनी है. At this place, I have to calculate a Q value. तो right side की value minus left side की value plus पिछली Q value, and I'll get this Q value. फिर मुझे यहाँ पे करनी है Q value. तो right side E value minus left side E value plus पिछली Q value. And in this way, I will write down Q values in the second row of Qs. So E to the right minus E to the left plus Q above is the formula for every value of Q that we'll fill in the second row. Now the second row of E's, or the fourth row of the table, हमने E values निकालनी है. याद रहे कि फर्स्ट और लास्ट E वैल्यू हमेशा 0 लिखी जाएगी. हम यहां से बात करना शुरू कर रहे हैं. Q values के नीचे जो E value आएगी, that will be the Q value on the right divided by Q value on the left multiplied by E value last. अच्छा, यहाँ पे तो नजर आया कि E value last, सॉरी, मुझे नई E value जो यहाँ करनी होगी. इस पहले मैं Q values कैलकुलेट कर चुका हूँ. Let us look at this example so that we can understand it more easily. This is a 4-degree polynomial. The coefficients are 128 minus 256, 160, and so on and so forth. First Q value is this coefficient divided by this coefficient multiplied by minus 1. Next values of Q's are all zeros. First row of E's, first and last element 0. In between, first row of E is developed in a special form. What form? A2 upon A1 placed here, A3 upon A2,
placed here, A4 upon A3 placed here. So fixed method of developing rows is now over. अब मुझे ये value लिखनी है. This value Q की right value of E minus left value of E plus previous value of Q. Next value of Q, right value of E minus left value of E plus previous value of Q, and so on. Then the next row of E, first element and the last element is 0, and this new E value, right Q value divided by left Q value multiplied by previous E value. Next E value, next Q value, right E value minus divided by left E value. नहीं, गड़बड़ हो गई. I was working here. पहली दो रोज में वो तो अलग तरीके से डेवलप हो रही हैं. This E value is this right Q value divided by left Q value multiplied by previous E value. This is calculated as what? Right Q value divided by left Q value multiplied by previous E value. इसी तरह ये भी calculate. And one row of Q developed, then one row of E developed, then one row of Q developed, then one row of E developed. इस तरह से ये चलता रहेगा मामला. कहाँ तक चलता रहेगा? This is a column of E. This is the column of E. This is column of E. Now see that E values are coming very, very close to 0. This one is very close to 0. When we observe that these E values are close to 0, at that stage, the 4 Q values, this one, this one, this one, these are nearly roots of the given 4th degree polynomial. That's it for today. I'll reconsider this example next time. And sorry, my connection was gone, but I have already decided to terminate the lecture. And next time, that is Sunday, we'll be considering start considering QD algorithm and move forward. And here I stop the recording. I terminate this discussion today. And अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा. So I'm terminating the meeting now. Allah Hafiz, take care.